So I hope this is clear to everyone. I hope this is clear as to how you should read, how to understand, how to basically interpret the graph, right? I hope this is clear to everyone, right? All right. So now, if this is clear, let's go ahead for the questions, right? Let's go for the questions now. So let's solve this one. Let's solve this one. So right now it is 9:25. Okay, just take 2 minutes and tell me the answer to this question. Some people have already solved. Others also try solving. बाकी लोग बताओ. बाकी लोग बताओ. बाळा तुमचं चपाती बुडवली की नाही आता असं वाटतं तू जेवलीच नाही भाज्या. Okay, so I can see a lot of people have answered option number C. बाकी लोग क्या बोल रहे हैं? बाकी लोग बताओ. Okay, Manish is saying A. Okay, Anuj is also saying A. Okay. अभी भी majority is with C, but some people are saying A as well. Okay, ठीक है, ठीक है, ठीक है. Okay, some people are saying C, some people are saying A. ठीक है. ठीक है, ठीक है. All right, so let's try and understand as to how should we go about solving this question. ठीक है. So question में क्या बोल रहा है? ठीक है. Question में क्या बोल रहा है? The ratio of number of years in which the foreign exchange reserves are above the average reserves to those in which the reserves are below the average reserves is. ठीक है. So there are two methods to solve this question, right? One of the ways is either you can calculate the average, right? Calculate the average, and then you have to compare कि किस कहाँ पे ज्यादा है कहाँ पे कम, करेक्ट? तो एवरेज निकालो फर्स्ट. ठीक है, दैट इज वन ऑफ द मेथड्स. आई होप दैट मेथड इज क्लियर टू एवरीवन. सबने ये मेथड यूज किया है क्या? Is approach one clear to everyone? Is approach one clear to everyone? Approach one is basically find out the average and then compare the average with each of these years, right? Find the average and then compare. ठीक है, this is approach number one. ठीक है, this is method number one. Is method number one clear to everyone? If not, I'll explain approach one as well. Clear? किसी को नहीं क्लियर तो बताओ. किसी को नहीं क्लियर तो बताओ. ठीक है. आई होप ये बहुत ही बेसिक है, इसमें कुछ भी नहीं कर रहे हैं. हर साल का नंबर लिख लो. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2800 लिखा था, यहाँ पर 3800 लिखा था. ठीक है. दिस नंबर इज समवेयर अराउंड लेट्स से 2600. ठीक है. दिस नंबर इज 30. So this is around 3400 for example. This is 3200. ठीक है. This number is 4400. This is 5000 and this number is 32, right? 32, right? So you can take the average of all of these numbers. ठीक है. So for example, whatever the average comes out, ठीक है, जो भी एवरेज आता है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर 40,000 4,000 का लेट्स से एवरेज अगर आता है फॉर एग्जाम्पल, या फिर 32,000 का अगर एवरेज आता है, 3200 का, तो देन यू हैव टू जस्ट चेक कि कहाँ पे फॉरेन रिजर्व जो है ज्यादा है और कहाँ पे कम है, राइट? यू हैव टू जस्ट फाइंड द रेशियो वेयर द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर अबव द एवरेज टू दोज इन विच द रिजर्व्स आर बिलो द एवरेज. ठीक है, ठीक है. सो नाउ
Mohit has done the calculation. Average is coming out to be around 3400, ठीक है, 3460 के आसपास एवरेज आता है. तो 3460 से ज्यादा कहाँ कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे ज्यादा है 3460 से, ठीक है, यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर ज्यादा है, राइट. तो 3460 से 3 जगह पे ज्यादा है, 5 जगह पे कम है. देयर आर 8 years डेटा. तो 3:5 शुड बी द आंसर. 3:5 शुड बी द आंसर. क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है ये चीज? ठीक है. So this is one of the methods. इसके अलावा there is one more method called as assumed mean method, right? I think assumed mean method. So what do we do in that is, ठीक है. So this is approach number 1. In approach 2, we are going to use assumed mean method. ठीक है. What we do in this case, ठीक है. What we do in this case is we will assume any of these numbers as a mean. ठीक है, मतलब जहां पे भी हम लोगों को ज्यादा चांसेस लग रहा है, वी कैन अज्यूम दैट नंबर एज अ मीन. ठीक है. सो फॉर एग्जांपल इन दिस केस लेट्स से 3200 को हम लोग अगर मीन ले लेते हैं, राइट. लेट्स से 3200 को हम लोग मीन ले लेते हैं. ठीक है. तो 3200 को मीन ले लिया, तो दिस नंबर इज -400, बेसिकली 400 बिलो दैट मीन, राइट. सो दिस नंबर इज 400 बिलो दैट नंबर, राइट. 400 below that number. This number is 600 above that number. This number is -600. This number is 200. This is 0. This is 1600. Sorry, 44. 1200. This is 1800 and this is 0. Right? This is 1800. Now you have the differential from the mean. You have the differential from the mean. You just have to take the average of that differential, right? You just have to take the average of that differential. तो 600 तो गया एवरेज निकालने के टाइम पे. -400 + 200 is -200. ठीक है. -200 + 1200 is 1000. 1000 + 1800 is 2800, right? 2800 number of graph, number of year is 1 2 3 4 and 1 8, right? So 8. So this is somewhere, so 2800 upon 8, right? 2800 upon 8. This is somewhere around 300 something, right? 300 के आसपास ये आएगा, right? 350 या something around that. ठीक है. 300 के ऊपर होगा, 350 के आसपास होगा, है ना? 350 मान लो. तो पहले हमने एवरेज लिया था 3200 का, इसमें 350 अगर ऐड कर लेते हैं, so now our new average is 3550, right? 3550. Now we can see that here, and here we have the forex more than the average, right? More than the average. So the answer is 3:5, right? So in both the cases, the answer will be the same, right? But the approach are different, right? So the aim में थोड़ा सा टाइम बचा सकते हो, ठीक है. aim में थोड़ा सा टाइम बचा सकते हैं. Is this clear? Clear to everyone? Done? किसी को डाउट है तो पूछो. Doubts? Any doubts? If there are no doubts, we'll move to the next question. Okay. All right. अगले सवाल पे आते हैं. Now this is question number 2. Now tell me the answer. Tell me the answer in this question. Okay, Ashutosh is saying AM में middle number में mean कर नेगेटिव और पॉजिटिव का रेशियो ले लें सीधा, तो नहीं होगा ना. एएमएम में एक पहले हमने मीन एज्यूम किया था, राइट. दैट इज नॉट द एक्चुअल मीन, राइट. हम लोग क्या कर रहे हैं कि डिफरेंस कैलकुलेट करके मीन ही फाइंड आउट कर रहे हैं, बट वो इजियर तरीका है, फास्टर तरीका है. तो वंस वी हैव दैट मीन और क्लोज टू मीन, देन वी विल हैव टू कंपेयर. ठीक है. ठीक है. नाउ टेल मी द आंसर टू दिस. ओके. बाकी लोग बताओ.
कुछ लोग 1.4 कह रहे हैं, कुछ लोग 1.5 कह रहे हैं, सब कुछ लोग और भी अलग अलग ऑप्शन भी बता रहे हैं, ठीक है। ओके ओके, ठीक है ठीक है, तो आओ देखते हैं इस क्वेश्चन को। द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इन 2006-7 वाज हाउ मेनी टाइम्स दैट इन 2003-4? 3-4 में व्हाट इज द नंबर? 3-4 में इफ यू लुक एट दिस, इट इज अराउंड 3400, 3400 नंबर है, ठीक है, 3400 है, ठीक है। एंड द डेटा हियर सेज दिस इज 5000, ठीक है, दिस इज 5000, so 5000 and this is 3400, right? So what is, how many times this has grown? So 5000 upon 3400, right? This is a very basic calculation. So basically 1.5 times. Half of this is how much? 17. Half of this is 17. If you add 17, so this will become 5100. So very close to 1.5. Very close to 1.5. Okay. So 1.5 should be the answer. Okay. If you calculate this, it will come somewhere around 1.47. Correct. You guys are right. 1.47 के पास आएगा. 1.4 और 1.5 के बीच में है, but it is more close to 1.5, and that's why. So if this would have been a theta question, then you would have to calculate. ठीक है. But यहाँ पे, so basically अगर 40% कैलकुलेट करो ना, इसका 40% कैलकुलेट करो, 10% इज 10% इज 340, ठीक है, 10% इज 340, राइट, 10% इज 340, इसका अगर 5 टाइम्स कर लो तो you'll get 50%, ठीक है। So 5 times is 1700 and 4 times it is 160, 1360, है ना, 4 times this will be 1360. So 1360 अगर ऐड करोगे, so this will be 4760 and this is 5100. So this is closer. This is closer, right? क्लियर है? क्लियर है सबको? 1.5 क्लियर क्लियर, एनी क्वेश्चंस? ये तो बस बहुत ही आसान सा सवाल था। अच्छा, आई एक्सप्लेन अगेन, ठीक है। सो एडमिन, तो एडमिन यहाँ पे अगर तुम देखो, फॉरेक्स रिजर्व इन 2003 एंड 4, 3-4 में जो फॉरेक्स रिजर्व है फाइनेंशियल ईयर 3-4 में, इट इज 3400, ठीक है। इन 2006-7 द फॉरेक्स रिजर्व इज 5000, ठीक है। तो कितना इंक्रीमेंट हुआ है, राइट, कितना इंक्रीमेंट हुआ है, और व्हाट इज, सो दिस नंबर इज हाउ, व्हाट टाइम्स दिस नंबर इज द क्वेश्चन, ठीक है। ये नंबर इससे कितना टाइम्स हो गया है, ठीक है। सो 5000 divided by 3400 should give you the answer to this question, ठीक है, कि 2006-7 में ये डेटा है, 6-7 का ये है, एंड 3-4 का ये है, ठीक है। 6-7 बाय 3-4 करा है हमने, तो 6-7 में 5000 था एंड 3-4 में 3400 था। इफ यू कैलकुलेट हियर, दिस विल बी 25/17, ठीक है। तो दिस, so 17 into 1.5 is 25.5, so very close to 1.5 times, very close to 1.5 times. Should we not take 3400 by? No, why will you take that? The question very specifically says the foreign reserves in 2006-7 was how many times that in 2003-4. So 2003-4 is the benchmark from where you are comparing 2006-7 का data, ठीक है। अगर क्वेश्चन रिवर्स ऑर्डर में पूछता, देन यू वुड हैव टू डू दैट, क्लियर?
क्लियर गाइस? ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. All right, again, one more question on the same paragraph. Guys, solve, solve. So we have around 80 people in the class, but only 10, 12 are answering. Why the others are not answering? बाकी लोग भी करो यार, इतना आसान तो सवाल है. नहीं हो रहा है तो क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन नहीं समझ में आया. Okay, I'll explain the question. ठीक है, question is saying that for each year the percentage increase of foreign exchange reserves over the previous year is the highest. ठीक है, तो बोला कि कौन से ईयर में, so you have four options and you have to compare कि कौन से साल में previous year के comparison में सबसे ज्यादा increase हुआ है in foreign reserve. So when you are saying that 2001 to, so 2000, so 2001 और इस दोनों साल के बीच में what is the change, right? When you are saying 2002 3, so 2001 to and 2002 3 के बीच में what is the change, right? यहाँ पे तो डिक्रीमेंट हुआ है, तो this cannot be the answer, right? This cannot be the answer. ऑप्शन सी में देखो 2003 एंड 4, तो उसके प्रीवियस ईयर से इस साल में कितना इंक्रीमेंट हुआ है. ठीक है, एंड लास्ट ऑप्शन इज 5 6, सो 5 6 2004 5 से कितना इंक्रीज हुआ ये, राइट? सो दिस इज द क्वेश्चन, एंड जहां पे भी जो हाईएस्ट इंक्रीज है दैट इज गोइंग टू बी द आंसर. क्वेश्चन इज क्लियर? क्वेश्चन इज क्लियर? ओके. Okay. Keshav is saying, but in these type of questions, if we assume it 2700 instead of 2800 in 2000, won't the answer which are close dependent on the assumption? हाँ, definitely केशव, वैसा होगा, वैसा हो सकता है. बट जनरली इस तरह से इतने क्लोज ऑप्शंस नहीं होते हैं इफ द डेटा इज नॉट वेरी क्लियर. ठीक है, तो मे बी इफ दिस इज डिफिकल्ट टू assume, I'll zoom on the numbers. Now it will be much more easier for you guys to understand the numbers. ठीक है, अभी क्लियर है ज़्यादा? ठीक है. नो चिराग, बी कैन नॉट बी द आंसर ना. बी में कैसे हो सकता है? 2002 3 में तो डिक्रीज हुआ. बी तो वैसे ही रूल आउट. ठीक है, अभी भी कुछ लोग ए कह रहे हैं, कुछ लोग डी कह रहे हैं. ठीक है, जूम के बाद सब ये बता रहे हैं. ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो आओ देख लेते हैं, आओ देख लेते हैं. ठीक है, सो दिस नंबर वी हैड अज्यूम्ड अर्लियर एज 3200.
ठीक है, ये 4400 लिया था हमने इस नंबर को, ठीक है, दिस नंबर इज 2800, ठीक है, दिस नंबर इज 37 या 38, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 38 भी अगर लेते हैं, ठीक है, 38 लिया था या ठीक है, सो 3800 ये, तो यहाँ पे 1000 का इंक्रीज है, यहाँ पे 1200 का इंक्रीज है, ठीक है, अच्छा 2002, ये भी तो देखना है अपने को ना, राइट, तो दिस नंबर इज अगेन स्मॉलर देन दिस, ठीक है, सो 2600, एंड दिस नंबर इज मोर देन दिस 3400, ठीक है, यहाँ 1000 का जंप है, यहाँ पे 800 का जंप है, और यहाँ पे 1200 का जंप है, ठीक है, सो 1200 ऑन 3200, 1000 ऑन 2800 एंड 800 ऑन 2600, राइट, तीन नंबर है अपने पास, दिस नंबर ऑब्वियसली इज स्मॉलर देन दीज टू, ठीक है, बट ठीक है, फिर भी अगर करना चाहो तो कर सकते हो, 1000 अपॉन 2800, these are the three ratios, right? Option B तो ऐसे रूल आउट हो गया, option A is this, option C is 800 upon 2600, and option D is 1200 upon 3200, ठीक है, तो बस बेसिक सा कैलकुलेशन है, बेसिक सा कैलकुलेशन है, ठीक है, बेसिक बेसिक कैलकुलेशन कर लो उसको, देख लो सबसे सबसे बड़ा जो रेशियो है, दैट शुड बी द आंसर, दैट शुड बी द आंसर, ठीक है, तो इसमें देयर इज, आई होप द अप्रोच वाइज इट इज क्लियर, अप्रोच में तो वैसे भी कोई चैलेंज नहीं था, ठीक है, तो अगर इफ यू आर फाइंडिंग कि दीज टू आर वेरी क्लोज, ठीक है, तो फिर कैलकुलेशन कर लो रादर देन डूइंग द अप्रोच अप्रोक्सीमेशन, यू कैन डू द कैलकुलेशन एंड देन मार्क द आंसर, ठीक है, so guys, for questions like these it is very important to remember the fraction table. Remember, if we have discussed fraction table in one of our class, and you guys must have studied it in QA as well, right? अगर QA में देखो, अगर fraction table पढ़ा होगा, ठीक है, so you can make these smaller, right? So this can be written as 5 upon 14, ठीक है, this is 5 upon 14, this is 4 upon 13, this is 6 upon 16, and then 3 upon 8, right, 3 upon 8, ठीक है, 1 by 14, 1 by 14 you know is how much, 14.3, around 14.3 होता है 1 by 14, right, 14.3 होता है, right, 14.3 होता है, that means this number will be somewhere around 0.7, 0.7 आ जाएगा, ठीक है, 1 by 13, राइट, सो बेसिक वही वही यही कह रहा है कि बस 1/14, जो फ्रैक्शन टेबल थोड़ा बहुत याद अगर रखोगे, सो 1/14, 1/13 एंड 1/8, तो जैसे ही ये नंबर पता होगा, यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 3, 4 एंड 5, एंड देन यू विल बी एबल टू गेट टू द आंसर क्विकली, ठीक है, अगर नहीं भी याद है फ्रैक्शन टेबल, देन यू कैन डू द कैलकुलेशन एंड देन गेट टू द आंसर, ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, हाँ, सो सॉरी, 1/14 इज 7 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 7.14, ठीक है, 7.14, करेक्ट करेक्ट, 7.14, एंड 7.14 इंटू 5, 35 के आसपास आएगा, ठीक है, 35 के आसपास करेक्ट, ठीक है, एंड दिस इज 12.5, राइट, दिस इज 12.5, 12.5 इंटू 3, सो दिस विल बी 36, 37.5, ठीक है, सो यहाँ पे जहाँ पे 35 आ रहा है, दिस इज 37.5, so obviously this number is bigger than this, है ना, this number is bigger than this, so this is ruled out, this is ruled out, ठीक है, एंड ये नंबर से बड़ा ही था, तो D is greater, so answer should be D, ठीक है, clear, so I think fraction table is important when you want to save some time in calculation, ठीक है, so keep on practicing guys fraction table, ठीक है, fraction table will help you in DILR as well as in your QA as well, ठीक है, DILR में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि बहुत सारे DI के क्वेश्चन में यू कैन यूज इट डायरेक्टली, ठीक है, ठीक है, तो देख के बताना इन क्वेश्चंस में सही नहीं रहेगा, बिकॉज टू ऑफ योर ऑप्शंस आर वेरी क्लोज, राइट, यहाँ पे कितना, यहाँ पे ऑलमोस्ट 35 से ऊपर का परसेंटेज है, यहाँ पे 37%, ठीक है,
तो देख के तो नहीं बता पाओगे ना कि 35%, 37%। ठीक है, अगर देख करके बता पाओगे 30, 50, 70 अगर ऑप्शन आ रहा है तब फिर बता दोगे देख करके। बट अगर 30, 35 है तो देख करके नहीं पता चलेगा। ठीक है, क्लियर? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? आगे बढ़े। ऑलराइट, सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व अ क्वेश्चन ऑन स्कैटर प्लॉट। ठीक है, स्कैटर प्लॉट। सो सो बार ग्राफ देखा आपने? बार ग्राफ, आई होप बार ग्राफ समझा होगा सबको। बार ग्राफ कैसे रीड करते हैं, बार ग्राफ कैसे सॉल्व करते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट स्कैटर प्लॉट। ठीक है, सो स्कैटर प्लॉट इसको इसलिए बोल रहे हैं कि इफ यू लुक एट दिस ग्राफ, ठीक है, इफ यू लुक एट दिस ग्राफ, the data points are scattered on a xy plane, right? The data points are scattered on a xy plane. Okay, so if you want to know about this, so for example, let's say x denotes manufacturing, right? X denotes manufacturing. So here and here, these are the two companies which are involved in manufacturing. So if you look at this industry, this company specifically, so what is the sales of this company is there on the x axis. X axis पे sales है and y axis पे क्या है? Expense दिया हुआ है। ठीक है, sales और expense दिया हुआ है। So for this company, what is the sales? What is the sales? 800, 800 is the sales। ठीक है, 800 is the sales and what is the expense? Expense क्या है? Expense क्या है? 700 के आसपास है। ठीक है, 700। ठीक है, so I hope you have understood कि how to read this graph। ठीक है, how to read you have understood. Now tell me about this company. Tell me about this company. What is the sales and expense of this one? How to measure and why do you want to measure? देखो, ये बेसिकली डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, सो नाउ टू सॉल्व देयर आर टू अप्रोचेस, ईदर यू कन्वर्ट ऑल ऑफ दीज into a table and then do the calculation, or you do the calculation directly using this graph। ठीक है, बोथ आर इक्वली गुड। टेबल बनाने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा जाएगा, बट दैट विल बी इजियर, दैट विल बी इजियर। ठीक है, इसका बताओ, इसका बताओ क्या है सेल्स, क्या है एक्सपेंस? 2800 का सेल्स एंड 2200 का एक्सपेंस, करेक्ट? 2200, 2300। ठीक है, ठीक है, चलेगा। तो आई होप समझ में आ गया है लोगों को कि कैसे रीड करना है इस ग्राफ, राइट? समझ में आ गया कैसे रीड करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जैसे हमने बायोग्राफ में दिखा ना, तो वैसे ही यहाँ पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि मे बी यू कैन बी आस्क्ड टू कंपेयर द टू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, कि इन दोनों के सेल्स में क्या चेंज है, क्या परसेंटेज इंक्रीज है, एक्सपेंस में क्या परसेंटेज इंक्रीज है। सिमिलरली फॉर ऑटोमोबाइल कंपनी, और मे बी कलेक्टिवली दे कैन आस्क कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का सेल्स एंड ऑटोमोबाइल कंपनी का सेल्स एवरेज व्हाट इज मोर। ठीक है, सो अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड यूजिंग दिस ग्राफ। सो मेनली बट क्वेश्चन जो आएंगे वो इसी टाइप के आएंगे, या तो इंक्रीमेंट पूछेगा, डिक्रीमेंट पूछेगा, सेल्स एक्सपेंस दिया है तो प्रॉफिट पूछेगा, लॉस पूछेगा, करेक्ट? सो इन दिस क्वेश्चन इफ यू लुक हियर, द प्रॉफिट हैज बीन आस्क्ड, प्रॉफिट हैज बीन आस्क्ड। ठीक है, सो अगर ग्राफ सबको समझ में आ गया है तो ट्राई सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, ट्राई सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। रीड द क्वेश्चन एंड लेट मी नो इफ द क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरी। क्वेश्चन क्लियर है सबको? टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, डोंट गो इनटू टेबल क्रिएशन बिकॉज देयर इज ओनली वन क्वेश्चन ऑन स्कैटर प्लॉट फॉर दिस। ठीक है, टेबल बना करके टाइम वेस्ट होगा। हाँ। ओके, व्हाट इज द डाउट अर्जुन? डाउट इज विद द क्वेश्चन। ठीक है, तो आई विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन आल्सो। ठीक है, if you read this question, it says that for how many of the companies is the profit more than 40% of the sales? ठीक है, प्रॉफिट का डेफिनेशन भी दिया हुआ है सेल्स माइनस एक्सपेंस। ठीक है, तो सेल्स तुमको पता है सारे कंपनीज का, एक्सपेंस तुमको पता है सारे कंपनीज का, तो बताना है तुमको कि कितने कंपनीज ऐसे हैं जहां पे प्रॉफिट इज मोर देन 40%। प्रॉफिट इज मोर देन 40%। दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्लियर है?
The same symbols are denoting a industry, not the same company. These are different companies. These are different companies in the same sector. Okay, so for example, sorry, automobile sector is in circle. Okay, software is square and cross is manufacturing. Okay. ठीक है. So now solve the question, guys. Solve the question. कितना टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में? कितना टाइम जाएगा? 10 seconds. Good. बाकी लोग बताओ. सॉल्व करो, जल्दी जल्दी बताओ. 5 seconds. बहुत बढ़िया. 20. Okay. Okay. बाकी लोग भी बताओ. Only few people have answered. How is symbol a challenge? Symbol से कैसे confusion हो रहा है? So all of these scattered graphs are each of a different company. So this is one company, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 companies. These are different companies. बताओ. बाकी लोग बताओ यार. All right. काफी टाइम दे दिया है. Let's try to solve this question. ठीक है. Let's try to solve this question. So here, if you read it carefully, it says that you have to find those companies where the profit is more than 60%. Profit is more than 60% का क्या मतलब है? Sales minus expense. ठीक है. ये 40% से ज्यादा होना चाहिए. ठीक है. 40% से ज्यादा होना चाहिए. राइट. सो अगर 40% से ज्यादा होगा, दैट मीन्स योर एक्सपेंस विल बी लोअर देन 60%. एक्सपेंस 60% से छोटा होगा तभी सेल्स माइनस एक्सपेंस विल बी मोर देन 40%. राइट. If your expense is less than 60%, that means your profit will be more than 40%. Yes, no, any doubts, any questions, anything, any comments? Please बताओ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये जिसको समझ में आ गया, क्लिक कर गया, तो ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं. ठीक है. नहीं समझा. ठीक है. एक्सप्लेन अगेन. ठीक है. इफ यू वांट योर प्रॉफिट टू बी मोर देन 40%. ठीक है. इफ यू वांट योर प्रॉफिट टू बी मोर देन 40% ऑफ द टोटल रेवेन्यू, है ना? टोटल रेवेन्यू पे ही कैलकुलेट कर रहे हैं. टोटल रेवेन्यू इज टोटल सेल्स. सेल्स का 40% से ज्यादा इफ यू वांट योर प्रॉफिट. ठीक है. तो इसका मतलब एक्सपेंस शुड बी लेस देन 60%. अगर मान लो 100 रुपए का सेल किए हो. ठीक है. 100 रुपए का अगर सेल किए हो, अगर 70 रुपया एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट इज हाउ मच? 30. प्रॉफिट इज ओनली 30. इफ लेट्स से यू हैव मेड अ सेल ऑफ 100 rupees and your expense is 50, that means your profit is 50%. 50 rupees का प्रॉफिट हुआ है. So in this case, you have profit more than 40%. In this case, you have profit less than 40%. ठीक है. So 40% का मतलब क्या है कि योर एक्सपेंस शुड बी एग्जैक्टली 60%. तो 40% का प्रॉफिट बनेगा. ठीक है. बट तुमको क्या फाइंड करना है? 40% से ज्यादा प्रॉफिट. दैट मीन्स योर एक्सपेंस शुड बी लेस देन, राइट, लेस देन 60% होना चाहिए एक्सपेंस. Less than 60%. Yeah, ऑफ द सेल्स, ऑब्वियसली, ऑफ द सेल्स.
करेक्ट, अभी समझा सबको? So if you look at this, 1,600, this is your 60%, 2,000 and 1,200, 60%, 3,800, 60%. So this is the line of your 60%. 60% का ये line, ठीक है? This is the line of 60%. Any company which is having, which are on this side, is having expense more than 60%, right? ये सारे कंपनीज का एक्सपेंस इज मोर देन 60%. ये सारे कंपनीज का एक्सपेंस इज मोर देन 60%, यस नो? है ना? एंड दीज कंपनीज आर हैविंग एक्सपेंस लेस देन 60%. एक्सपेंस लेस देन 60 वाले यहाँ पर है, ठीक है? एक्सपेंस लेस देन 60% वाले ये कंपनीज है. ओके, देखो, 1,000 इज योर सेल्स एंड 600 इज द एक्सपेंस. दैट मीन 60% इज दिस. सेल्स का 60% यहाँ पे आएगा. अगर कोई कंपनी यहाँ पे है, फॉर एग्जाम्पल इट्स इफ देयर इज अ कंपनी कॉल्ड एज ए विच इज ऑन दिस पॉइंट, ठीक है? उसका प्रॉफिट कितना होगा? उसका प्रॉफिट कितना होगा? उसका प्रॉफिट कितना होगा? ए का प्रॉफिट कितना होगा? 400 का प्रॉफिट होगा. 400 रुपीज का प्रॉफिट होगा. एंड परसेंटेज टर्म्स में कितना होगा? परसेंटेज टर्म्स में कितना होगा? 1,000 का 400, तो बेसिकली 40% का प्रॉफिट हो रहा है. 40% का प्रॉफिट हो रहा है. सिमिलरली अगर कोई 2,000 का रेवेन्यू कर रहा है एंड 1,200 का एक्सपेंस है, मतलब 800 रुपए का प्रॉफिट है. 800 रुपए का प्रॉफिट ऑन 2,000 रुपीज इज अगेन 40% का प्रॉफिट, ठीक है? तो ऑल ऑफ दीज लाइन्स आर 40% का प्रॉफिट लाइन, या फिर एक्सपेंस इज 60% इन ऑल ऑफ दीज केसेस. कोई भी कंपनी अगर इस लाइन पे फॉल करता है तो उसका एक्सपेंस इज 60%. करेक्ट? 60% एक्सपेंस वाले इस लाइन पे फॉल करेंगे. 60% से ज्यादा एक्सपेंस वाले इधर जाएंगे, 60% से कम एक्सपेंस वाले इधर आ जाएंगे. क्लियर? तो यहाँ पे इफ यू काउंट द नंबर ऑफ कंपनीज, 1 2 3 4 5 6, 6, राइट? 6 कंपनी. ओके, कोई पूछ रहा था कि प्रॉफिट तो कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे, राइट? स्वप्निल इज आस्किंग कि प्रॉफिट तो कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे, बट क्वेश्चन में पढ़ो ना क्या लिखा है. क्वेश्चन इज सेइंग दैट for how many of the companies is the profit more than 40% of the sales, right? Very specifically it has mentioned the 40% of the sales. ठीक है? ठीक है? Clear? Clear? This question is clear to everyone? Okay. ठीक है. अथर्व इज सेइंग, ठीक है, अभी रुक जाओ, रुक जाओ. और एक क्या एग्जांपल? ठीक है. सो अथर्व इज सेइंग कि 50% पे यही वाला चीज को एक्सप्लेन करके बताओ. ठीक है? 50% पे ये चीज एक्सप्लेन करके देखो. तो 50% का मतलब क्या है कि व्हेन योर सेल्स विल बी 1,000, योर एक्सपेंस शुड बी 500. या इसका मतलब कि यहाँ कहीं होना चाहिए वो नंबर, राइट? यहाँ कहीं होना चाहिए वो नंबर. व्हेन योर सेल्स इज 2,000, योर एक्सपेंस शुड बी 1,000. व्हेन योर सेल्स इज 3,000, योर एक्सपेंस शुड बी 1,500. ठीक है? 4,000 होगा तो 2,000. ठीक है? 5 होगा तो 2,500. ठीक है? सो नाउ यू हैव अनदर लाइन रिप्रेजेंटिंग 50%, राइट? 50% का ये लाइन हो जाएगा. पेपर में लाइन के बनाने का क्या जरूरत है? तो स्केल रख लो ना, दिख जाएगा. और तो समझा? क्लियर है? ठीक है. एनी क्वेश्चंस, कोई और कोई सवाल है?
Divakar is saying 2800 upon 1900 is equal to 1.47, which is more than 40. कौन सा वाला एग्जाम्पल, कौन से वाली कंपनी के लिए बात कर रहे हैं हम? दिवाकर, 2800 बाई 1900 कौन से वाले का एग्जाम्पल है? सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर में 2800, ठीक है, एंड 1900, ठीक है। 1900 इज योर एक्सपेंस, ठीक है। 2800 इज योर सेल्स, ठीक है। 2800 का सेल्स है, 1900 का एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट कितना होगा? 900 होगा ना। प्रॉफिट तो 900 होगा ना, 1900 प्रॉफिट थोड़ी है तुम्हारा। प्रॉफिट इज 900 एंड सेल्स इज 2800, सो 900 अपॉन 2800, राइट? 900 upon 2800, so this is less than 40%. Clear? ठीक है, क्लियर। चलो let's move to the next question. ठीक है, अगर इंटरसेक्ट कर रहा हो लाइन से, तो दैट मीन्स अगर लेट्स से अगर इंटरसेक्ट कर रहा है, फॉर एग्जांपल लेट्स से इफ दिस पॉइंट वुड हैव बीन हियर, ठीक है, इफ लेट्स से दिस पॉइंट वुड हैव बीन हियर, दैट मीन्स यू नो दैट दिस इज 50%, दिस इज 50% ऑफ, तो जितना सेल है उसका 50% एक्सपेंस है, 50% विल बी द प्रॉफिट हियर। ठीक है, या आंसर इज सी। ठीक है, let's move to this one. Okay, so in this question, so this question is on deviation graph. ठीक है, deviation graph, यहाँ पे you can see that there are again, so scatter plot ही है ये भी, this is also kind of a scatter plot only, but यहाँ पे the reason why we are calling it as a deviation graph, because you see that we are plotting both positive negative on both the things. ठीक है, I'll zoom. ठीक है, is the question visible to everyone? Question as well as the graph. ठीक है, so now tell me the answer to this one. Tell me the answer to this one. ठीक है, एक बार पढ़ो इस क्वेश्चन को। ठीक है, so right now it is 10:08. दिवाकर, क्वेश्चन में लिखा है कि प्रॉफिट ऑन सेल्स निकालना है, ठीक है, एंड दैट इज व्हाई वी वर कैलकुलेटिंग ऑन सेल्स। ठीक है, यू आर राइट कि प्रॉफिट हम लोग कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, ये पॉइंट और भी किसी ने मेंशन किया था, बट क्वेश्चन में लिखा है तो प्रॉफिट ऑन सेल्स निकालने के लिए तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। राइट नाउ इट इज 10:09। ठीक है, लेट्स कीप 2 minutes, 10:11 पर वापस आते हैं, टिल द टाइम यू गाइस सॉल्व करो। 2 मिनट इज मोर देन इनफ, मतलब 1 मिनट तो वैसे भी ज्यादा हो चुका है, 1 मिनट।
Okay, so people are still solving. ठीक, मतलब कुछ लोगों का तो आंसर आ ही गया, आई कैन सी, बट व्हाट अबाउट द रेस्ट? बाकी लोग क्या कर रहे हैं? नहीं समझ। ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, तो चलो फिर देखते हैं। हाँ, करता हूँ। ठीक है, so if you read the question, ठीक है, if you read this, it is saying that to compare the rainfall data, Indian Meteorological Department IMD calculated the long period average of rainfall during the period June to August for each of the 16 states. तो यहाँ 16 states हैं, उनका डेटा दिया हुआ है, and the figure given below shows the actual rainfall measured in during the June to August 2019 and the percentage deviations from LPA of the respective states in 2018. ठीक है, तो 2019 का डेटा दिया हुआ है एंड 2018 से कितना डेविएशन हुआ है, दैट इज ऑल्सो बीइंग रिफ्लेक्टेड ऑन दिस ग्राफ। ठीक है, तो गुजरात के बगल में जैसे जो 600 दिया हुआ है, सो 600 इज द रेनफॉल विच हैपेंड इन 2019 एंड 2018 से दिस नंबर हैज गॉन अप बाय 25%। समझा ग्राफ? समझा सब? ग्राफ समझा? ठीक है, तो नहीं समझा, फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, सो let's pick any of the other states। ठीक है, let's pick any of the others, let's pick महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र को पकड़ लो। ठीक है, तो if you read the figure given below shows the actual rainfall measured in during June to August 2019। ठीक है, तो महाराष्ट्र में जो 1000 यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज द रेनफॉल विच हैपेंड इन 2019। 2019 का डेटा तुमको दिया हुआ है। ठीक है, एंड it is also given the percentage deviation from LPA in 2018। so 2018 में जो भी था नंबर, वहां से दिस नंबर हैज इंक्रीज्ड बाय 30%। राइट, 30% का डेविएशन है। इफ यू लुक एट द वाई एक्सिस, दिस इज डेविएशन, राइट, डेविएशन, एंड दिस इज द एक्चुअल रेनफॉल इन 2019। ठीक है, 2019 का रेनफॉल यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है एंड डेविएशन के साथ साथ। सो नाउ यू हैव द डेटा ऑफ 2018 एज वेल एज 2019। राइट, समझा? क्लियर है? क्लियर है सबको? ग्राफ समझ में आ गया? ग्राफ समझ में आ गया? अरे अगेन, ठीक है, चलो, तो देखो, अगर यहाँ पे यू नो कि महाराष्ट्र में 2019 में, ठीक है, महाराष्ट्र में 2019 में 1000 का रेनफॉल हुआ है। ठीक है, एंड 2018 से 2018 में लेट्स से x हुआ था रेनफॉल। ठीक है, तो x और ये जो नंबर है, इसके बीच में जो परसेंटेज इंक्रीज है, दिस इज हाउ मच? दिस इज 30%। तो 1000 is equal to 1.3x, right? So you can calculate x, right? You can calculate x, right? So 2018 का भी डेटा मिल जाएगा तुमको, 2018 का भी डेटा मिल जाएगा। Similarly for all the other states, similarly for all the other states, this is the data which is given। समझा सबको? समझ में आ गया? ठीक है, चलो, अब समझ में आ गया तो क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पर आते हैं। So question is saying if a heavy monsoon state, ठीक है, if a heavy monsoon state is defined as, if a heavy monsoon state is defined as a state with actual rainfall from June to August of 900 or more, so 900 का जो लाइन है is here, right, 800 and 1000 के बीच में। तो जो भी स्टेट्स में 900 से ज्यादा का रेनफॉल हो रहा है, those states are called as heavy monsoon state। For example, Maharashtra is a heavy monsoon state, Sikkim is a heavy monsoon state, correct? Mizoram, Goa, Arunachal, Kerala, and Meghalaya. So all of these states are heavy monsoon state, right? Now, then approximately what percentage of
heavy monsoon states have a negative deviation from the LPS in 2019. So negative deviation कहाँ पे हुआ है? Negative deviation कहाँ पे हुआ है? In Arunachal, Kerala and Meghalaya. These are the three states where you can see negative deviation, right? So out of how many states? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Out of 7 heavy monsoon states, you have 3 states where there is negative deviation, right? 3 states where there is negative deviation. Question पूछा है कि what is that percentage? What percentage of heavy monsoon have a negative deviation? That means 3 upon 7 into 100. 3 upon 7 into 100. फ्रैक्शन टेबल अगर याद हो तो 1/7 इज 14.3. ठीक है, 14.3. तो 14 इंटू 3 इज 42. 42.9 होना चाहिए. तो दिस 42.86. क्लियर? क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है. ठीक है. So guys, there is, I hope there is one more session which has been planned for today, right? From 11 to 12. So since we have some more questions to solve, okay, some more questions to solve, maybe let's extend the same session, and rather than having the same, I mean this session at 11. होमवर्क नहीं यार, और एक सेशन तो होने ही वाला है ना. तो इसमें जो और भी जो क्वेश्चंस है, let's solve those questions also, and then maybe we can conclude. Yes. ठीक है. So let's continue. I hope this is okay. ठीक है, चलो बढ़िया. बहुत बढ़िया. Thank you so much. चलो आगे बढ़ते हैं फिर. This question is clear? This question is clear? Clear? Let's move ahead. ठीक है. So this is the question I was talking about, right? So we have discussed some DI. ठीक है, DI questions. ठीक है, DI काफी हो गया. ठीक है. So let's try to solve some puzzle. Let's get into the LR part. थोड़ा LR भी करते हैं, थोड़ा analytical puzzle solve करते हैं. ठीक है. So if you read this question, ठीक है, कुछ लोग का LR अच्छा होता है, कुछ लोग का DI अच्छा होता है. ठीक है, लेकिन दोनों को सॉल्व करना है. तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर. ठीक है. Now what you have to do in this question is you have to find the arrangement, right? So basically you have to solve this puzzle. You have to tell me कि कौन सा person किस country को belong करता है and कहाँ पे coach कर रहा है. Correct? So this is the question, right? So how much time do you think it will take to solve? कितना समय लगेगा? नहीं, होमवर्क नहीं है, क्लास पर की. 4 to 5 minutes, 10 minutes, okay, 7 minutes. नहीं, 11 से सेशन नहीं हो रहा है, यही सेशन एक्सटेंड हो रहा है. यही सेशन एक्सटेंड हो रहा है. ठीक है. सो ठीक है. सो लेट्स कीप 5 minutes. ठीक है, लेट्स कीप 5 minutes, है ना? लेट्स कीप 5 minutes. राइट नाउ इट इज 10:21. ठीक है, लेट्स कम बैक एट 10:26. ठीक है, तब तक सॉल्व करो.
क्या पढ़ा रहे
ऑलराइट, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम बैक। काफी लोगों ने कर लिया है, गुड। ठीक है, काफी लोगों ने कर लिया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, सो लेट्स ट्राई एंड सी एज टू हाउ वी कैन सॉल्व दिस वन। ठीक है, जिन्होंने नहीं किया है। ठीक है, सो हाउ वाज दिस पजल गाइस? जिन्होंने सॉल्व किया है, कैसा लगा? हाउ वाज दिस पजल? दिस इज अ वेरी वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन ऑफ अरेंजमेंट, राइट? बेसिक क्वेश्चन ऑन अरेंजमेंट। ठीक है, सो let's read the question. Okay, let's read the question. ठीक है, so if you read, you see that after facing yet another World Cup debacle, the board of cricket control in India is in the search of a new coach. ठीक है, so बहुत relatable point. ठीक है, now it shortlisted 5 person: Ansuman, Buchanan, John, Watmore and Chappell. ठीक है, each of them is from a different country among Australia, India, Japan, Pakistan, and Canada. Not necessarily in that order. At present, each of them is coaching the team of a different country among Australia, Bangladesh, China, Wales, and Bermuda. Not necessarily in that order. Okay, so there are 5 person who are shortlisted. Okay, so person, and then you also have their countries. Okay, and the country where they are a coach. Okay, so coach, I'll write that country as coach. Okay. So person, country, and coach, 3 columns. Okay. We have to basically create 3 columns, and we have the names of the person. This is Anshuman. Let's write it as AN. Let's write the second one as BU. John as J. What more? Okay. What more? And Chapel. Okay. So these are the names of the persons. Okay. So these people are from one of these countries, either Australia, India, Japan, Pakistan, and Canada, and they are currently coaching one of these countries. Okay. Now let's read some of the additional information which is given. For any person, each of these 3 particulars, his name, name of the country, and the name of the country that where he's coaching at present, should start with a different letter. That means if A is here, A cannot come here, A cannot come here, right? If B is here, B cannot come here, B cannot come here, right? Initials have to be different for the country where they are from and the country where they are coaching. ठीक है, clear है? Point number 1 is clear to everyone. Any doubts with point number 1? Any doubts with point number 1? Any any doubts? Any doubts? Point number 1 clear है, तो let's move to point number 2. ठीक ठीक है, let's move to point number 2. What more is coaching Australia? So what more का this country we know, this is Australia. ठीक है, what more is coaching Australia, and John is from neither Australia nor Pakistan. So John is not from Australia, not from Pakistan. So what are the other options that John has? ठीक है, पाकिस्तान से नहीं है and Australia से नहीं है. That means either India, Japan and Canada में से है. But if you read the name J, right? So he cannot be from Japan, right? He cannot be from Japan. That means there are only 2 options, either India or Canada. ठीक है, either India or Canada, right? Just give me a moment, please. ठीक है, so either John is from India or Canada. These are the only 2 options that he has. ठीक है, तो इंडिया या कनाडा हमने यहाँ पे लिख दिया है. आगे बढ़ते हैं. तो पॉइंट नंबर 2 इज क्लियर. पॉइंट नंबर 2 is clear. We have used point number 1, we have used point number 2. Let's move to point number 3, right? Point number 3 is saying Buchanan is not coaching China. So Buchanan is not coaching China, so this cannot be China, right? This cannot be China. And the person who is coaching Bermuda is from Canada. The person who is coaching Bermuda is from Canada. ठीक है, so country में आएगा Canada and coach वाले country में आएगा Bermuda, right? There will be one combination wherein the country will be Canada and the coaching country will be Bermuda. Now let's try to place this. Let's try to place this in this table, right? So Canada and Bermuda देखते हैं कहाँ पे फिट बैठता है. ठीक है, कनाडा और बर्मुडा कहाँ पे फिट बैठता है.
कनाडा बर्मुडा यहाँ आ सकता है क्या? कनाडा बर्मुडा यहाँ नहीं आ सकता है बिकॉज हियर द इनिशियल्स इज सी, राइट? द इनिशियल इज सी. Here it cannot be Canada Bermuda because Watmore is already coaching Australia. ठीक है. So this is ruled out. This is ruled out. ठीक है. Canada Bermuda cannot come here because B and B the initials are same. So this is also ruled out. Now Canada and Bermuda can come here, right? Canada and Bermuda can come here. Canada and Bermuda can come here, right? So these are the two possibilities. But if you read statement number 4, Anshuman is not from Canada. Anshuman is not from Canada. That means John has to be from Canada and he has to coach Bermuda. Clear? John should be that person who is from Canada and he's coaching Bermuda. Right? Clear? John is from Canada and he's coaching Bermuda. So point number 3 has been utilized. Right? Point number 3 has been utilized. Now, point number 4 पे आते हैं. Point number 4 का भी फर्स्ट हाफ हमने यूज कर लिया है. राइट? फर्स्ट हाफ हमने यूज कर लिया है. अंशुमन इज नाइदर फ्रॉम कनाडा नॉर फ्रॉम पाकिस्तान. सो यहाँ पे पाकिस्तान नहीं आ सकता है. ठीक है. देयर इज वन मोर कॉम्बिनेशन विच इज गिवन. द पर्सन फ्रॉम पाकिस्तान इज कोचिंग बांग्लादेश. ठीक है. सो पाकिस्तान और बांग्लादेश देखते हैं कहाँ पर फिट आता है. ठीक है. अंशुमन कैन नॉट बी दैट पर्सन हु इज फ्रॉम पाकिस्तान, मेंशन किया हुआ है. तो यहाँ पे पाकिस्तान नहीं आएगा. यहाँ पे पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं आ सकता है बिकॉज बी एंड बी विल गेट रिपीटेड. राइट? यहाँ ऑलरेडी हो चुका है, यहाँ पे नहीं आ सकता है. दैट मीन्स दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी. चैपल इज फ्रॉम पाकिस्तान एंड ही इज कोचिंग बांग्लादेश एट द मोमेंट. राइट? तभी वो इंडिया को हरा रहा था. ठीक है. ठीक है. ठीक है. तो क्लियर? पाकिस्तान एंड बांग्लादेश. ठीक है. नाउ let's see, let's try to fill all of the things which is remaining. Okay. So if let's say you already know what are the coaching countries where these person are coaching: Australia, Bangladesh, China, Wales, and Bermuda, right? So you have already mentioned Bangladesh, Australia, and Bermuda. You know this country is not China. That means this country will be Wales. This will be Wales, right? China नहीं है तो Wales होगा, right? So this will be Wales, and this will be China, correct? This will be China. Clear? ये पॉइंट क्लियर सबको? यहां तक क्लियर सबको? हाँ ना, कुछ भी बोल रहा है. Guys, clear till now? ठीक है. ठीक है. अभी आते हैं. Now, what are the countries option that we have? Australia. ठीक है. Australia cannot come here because A and A, right? Australia cannot come here. Right? So there is only one place for Australia, which is this. This is Australia, right? This is Australia, right? तो ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, पाकिस्तान हो गया. नाउ यू आर लेफ्ट विथ टू कंट्री, इंडिया और जापान, राइट? सो अंशुमन कैन बी फ्रॉम इंडिया और जापान, and Watmore can be from Japan or India, right? So these are the two possibilities that we have, right? So this is the end. This is the end to this puzzle, right? So now there could be many sorts of questions which can be framed on this, right? बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि let's say Buchanan is from which country, or maybe where he is coaching currently, or maybe the question can be if let's say Anshuman is from Japan, right? If let's say Anshuman is from Japan, what country is Watmore from? ठीक है. तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं. ठीक है. हम जीत गए. चलो ठीक है. तो समझ में आ गया सबको? इज दिस फाइन? एनी डाउट्स? कोई डाउट है तो बताओ. एप्पल का मजा आ गया. ठीक है. चलो. So let's move to the next. All right. Let's try to solve this one as well. Okay. Let's try to solve this one as well. Okay. So again, let's keep 5 minutes for this. Okay, 5 minutes.
नहीं नहीं, अमित अभी 11 बजे से क्लास नहीं, यही क्लास एक्सटेंड हो गया है। ठीक है, ठीक है। सो राइट नाउ इट इज 10:39, लेट्स कम बैक एट 10:44। ठीक है, 10:44 तक सॉल्व करो, लेट्स कम बैक एट 10:45।
ऑलराइट, वेलकम बैक एवरीवन। आई कैन सी कुछ लोगों ने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, चलो लेट्स ट्राई सॉल्विंग दिस वन। ओके, ऑलराइट, सो लेट्स read the question first. So kids from Srinivas Cooperating Housing Society played together every day. One day they decided to play a unique game of guess the coin. There were six kids in all, namely Saurabh, John, Mamta, Harry, Catherine, and Abhay. Exactly three out of these had one coin each with them. Each of the three had a coin of a denomination different from the other two. All the coins were in the denomination of rupees 5, rupees 2, and rupee 1. Right now, their other friends, Pooja, Kuresha, Rahim, Sanam, and Tulsi, were asked to predict the names of the kids having different denomination coins. In the table below, the predictions have been provided for your reference. ठीक है, तो इन्होंने prediction किया हुआ है. पूजा is saying that सौरभ के पास 5 रुपए का कॉइन है, ममता के पास 2 रुपए का कॉइन है, अभय के पास 1 रुपए का कॉइन है. कुरेशा is saying कि अभय के पास 5 रुपए का कॉइन है. जॉन is saying जॉन के पास 2 रुपए का कॉइन है, हैरी के पास 1 रुपए का कॉइन है. सिमिलरली बाकी लोग का भी प्रिडिक्शन है. राइट, क्वेश्चन इज क्लियर टिल नाउ? यहाँ तक सबको समझ में आया? यहाँ तक सबको समझा? इज देयर एनीवन जिसको नहीं समझा अभी तक? बताओ. ठीक है, सब लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं, सब लोग अपना अपना प्रेडिक्शन बता रहे हैं. ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं. फर्दर इट इज नोन फर्दर इट इज नोन दैट आउट ऑफ द किड्स प्रेडिक्टेड बाय पूजा, पूजा ने जो प्रिडिक्शन किया है, राइट, ओनली वन हैड अ कॉइन. सो इन तीनों में से किसी एक के पास कॉइन है, दो के पास नहीं है. राइट, but not of the same denomination as predicted. So for example, let's say if Saurav has the coin, okay, if let's say Saurav has the coin and Mamta Abhay is not having the coin, तो सौरभ के पास 5 रुपए का कॉइन नहीं होगा, इधर 2 रुपए का होगा या 1 रुपए का होगा. राइट, इफ लेट्स से ममता हैज द कॉइन, सो उसके पास 2 रुपए का कॉइन नहीं होगा, या तो 5 रुपए का होगा या तो 1 रुपए का होगा. क्लियर? पॉइंट नंबर 1 इज क्लियर? एनी डाउट्स विद पॉइंट नंबर 1? ठीक है, ठीक है. सो इफ पॉइंट नंबर 1 इज क्लियर, लेट्स मूव टू पॉइंट नंबर 2. ठीक है, पॉइंट नंबर 2 इज सेइंग आउट ऑफ द किड्स predicted by Kuresha, only one had a coin, but not of the same denomination as predicted. Similar to point number 1. So Kuresha, let's say if saying ke Abhay has a coin and these two person are not having a coin, so Abhay के पास coin होगा तो या तो 2 रुपए का होगा या तो 1 रुपए का होगा. ठीक है, सिमिलर जैसा पहला पॉइंट था वैसे दूसरा पॉइंट है. So point number 1 is clear, तो point number 2 should also be clear. Let's move to point number 3. Out of the total kids predicted by Sanam, ठीक है, so सनम पर आ जाते हैं. एग्जैक्टली टू हैड अ कॉइन बट नन ऑफ द सेम डिनोमिनेशन. तो सनम के केस में क्या है कि इन दोनों केस में ओनली वन हैड द कॉइन, बट इस केस में दो लोगों के पास कॉइन है, दो लोगों के पास कॉइन. ठीक है, तो दैट दोस टू पर्सन कैन बी एनी टू, राइट, इधर कैथरीन अभय, अभय सौरभ, राइट, या फिर कैथरीन सौरभ, राइट, बट दे आर नॉट विद द सेम डिनोमिनेशन. लेट्स से अगर कैथरीन और अभय के पास है, लेट्स से अगर कैथरीन और अभय के पास है, दैट मीन्स कैथरीन के पास 5 का नहीं होगा एंड अभय के पास 2 का नहीं. क्लियर? क्लियर है? तीनों पॉइंट्स क्लियर है सबको? तीनों पॉइंट्स क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर हो गया सब? सेट समझ में आ गया सबको? ठीक है, चलो अब लेट्स ट्राई टू सॉल्व. ठीक है, सो इफ यू लुक एट दीज 3 प्रेडिक्शंस, लास्ट पॉइंट रिपीट. ठीक है, लास्ट पॉइंट रिपीट करता हूँ. सनम का जो प्रिडिक्शन है, तो out of these three kids, two are having the coins. We don't know who are those two people. ठीक है, लेकिन 2 के पास कॉइन है, इतना हम लोग को पता है. और जो कॉइन है वो उस डिनोमिनेशन का नहीं है जो प्रिडिक्शन किया हुआ. सो फॉर एग्जाम्पल इट्स इफ कैथरीन हैज हैविंग द कॉइन एंड अभय इज हैविंग द कॉइन, so Catherine should not have 5 rupee coin. Catherine can have 2 or 1. Abhay can have 5 or 1. Clear? ठीक है, पॉइंट्स आर क्लियर. लेट्स ट्राई टू सॉल्व. ठीक है, पॉइंट क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर हो गया यहाँ तक सबको? क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको?
हाँ ना, कुछ बोल दो, कैसे समझेगा? समझ में आया? सवाल समझ में आ गया? ठीक है, चलो, let's try to solve. ठीक है, so if you look at all the three predictions, ठीक है, पूजा, कुरेशा and सनम, you see abhay is a common name, right? Abhay is a common name, right? Abhay is a common name. ठीक है, अभय is a common name. So let's start with अभय. ठीक है, let's start with अभय. So let's say if अभय is having the coin, if let's say अभय is having the coin, अभय के पास मान लेते हैं कि कॉइन है. ठीक है, अभय के पास कॉइन है, अभय के पास कॉइन है, अभय के पास कॉइन है. ठीक है, सो अगर अभय के पास कॉइन है, तो दैट मीन्स अभय के पास 5 रुपए का कॉइन नहीं होगा. अकॉर्डिंग टू दिस, अभय शुड नॉट हैव 5 rupee coins as per Kuresha. Abhay should not have 1 rupee coin as per Pooja, and Abhay should not have 2 rupee coin as per Sanam. Right? So तीनों ही options are discarded. Right? So that means Abhay should not have the coin. Abhay should not have the coin. So Abhay is ruled out. Right? Abhay is ruled out. Clear? Is this clear? ये clear है? अभय के पास coin नहीं है. ठीक है, I'll repeat. I'll repeat. We started with the assumption that Abhay is having the coin. ठीक है, अभय के पास कॉइन है, ये हमने अज्यूम कर लिया पहले. ठीक है, अभय के पास कॉइन है, तो पूजा के हिसाब से, पूजा का जो प्रिडिक्शन था, पॉइंट नंबर 1 इज सेइंग कि इन तीनों में से किसी एक के पास कॉइन है, एंड हम लोग बोल रहे हैं कि अभय के पास है. तो अगर अभय के पास कॉइन है, तो वो 1 रुपए का कॉइन नहीं हो सकता है, बिकॉज नॉट ऑफ द सेम डिनोमिनेशन एज प्रेडिक्टेड. अभय के पास कॉइन है बट 1 रुपए का कॉइन नहीं है. ठीक है, कुरेशा पे आते हैं. कुरेशा इज सेइंग अभय के पास कॉइन है बट 5 रुपए का कॉइन नहीं है. राइट? सनम इज सेइंग कि अभय के पास कॉइन है बट 2 रुपए का कॉइन नहीं. बट ऑप्शन तो यही तीन थे, बट दीज वर दी ओनली 3 ऑप्शंस दैट वी हैड, एंड ये तीनों कॉइन नहीं है. तीनों कॉइन नहीं है, दैट मीन्स कि अभय के पास कॉइन नहीं है. राइट? सो अजम्पशन जो हमने लिया था, राइट, दैट इज नॉट अ करेक्ट अजम्पशन, एंड दैट हैज बीन कॉन्ट्रडिक्टेड. ठीक है, तो अभय के पास कॉइन नहीं है, ये पता चल गया आपने. अभय के पास कॉइन नहीं है, दैट मीन्स कैथरीन और सौरभ के पास कॉइन है. राइट? राइट? ठीक है, अगर अभय के पास नहीं है, तो किसके पास होगा? कैथरीन के पास और सौरभ के पास. राइट? सो लेट्स लुक एट द केस ऑफ सौरभ. सौरभ के पास अगर कॉइन है, तो पूजा के अकॉर्डिंग भी सौरभ के पास कॉइन होगा. ठीक है, पूजा के हिसाब से भी सौरभ के पास कॉइन होगा. तो सौरभ के पास 5 रुपए का कॉइन नहीं होगा. सौरभ शुड नॉट हैव 5 rupee कॉइन. सौरभ शुड नॉट हैव 5 rupee कॉइन. सौरभ शुड नॉट हैव 1 rupee कॉइन. राइट? सौरभ शुड नॉट हैव 5, सौरभ शुड नॉट हैव 1. तो क्या होगा सौरभ के पास? सौरभ के पास 2 रुपए का कॉइन होगा. सौरभ के पास 2 रुपए का कॉइन होगा. करेक्ट? सौरभ के पास 2 रुपए का कॉइन होगा. तो कैथरीन के पास क्या क्या ऑप्शन है? कैथरीन के पास क्या ऑप्शन है? इधर 1 और 5. राइट? इधर 1 और 5. ठीक है, कैथरीन के पास ये दो ऑप्शन, या तो 1 होगा या तो 5 होगा. राइट? ठीक है. या तो 1 या तो 5, बट सनम के अकॉर्डिंग कैथरीन इज हैविंग 5 rupee coin. That means Catherine should not have 5 rupee coin. Catherine should not have 5 rupee coin. That means Catherine should have 1 rupee coin. तो अपने को मालूम पड़ गया कि कैथरीन के पास 1 है एंड सौरभ के पास 2 है. राइट? कैथरीन के पास क्या है? 1 रुपए का कॉइन है. सौरभ के पास 2 रुपए का कॉइन है. राइट? क्लियर? दिस इज क्लियर कि कैथरीन के पास कौन सा कॉइन है, सौरभ के पास कौन सा कॉइन है, ये पता चल गया अपने को. ठीक है, क्लियर टिल नाउ? क्लियर टिल नाउ? एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? एनी डाउट्स? ओके. ओके, कैथरीन. ओके, आई रिपीट अबाउट द कैथरीन पार्ट. सो देखो, सौरभ के पास 2 रुपए का कॉइन है, अभय के पास नहीं है, तो कैथरीन के पास क्या ऑप्शन बचता है? या तो 5 रुपए का कॉइन होगा या तो 1 रुपए का कॉइन होगा. बट सनम ने प्रिडिक्ट किया है कि 5 रुपए का कॉइन है, एंड यू नो दैट इट इज नॉट ऑफ द सेम डिनोमिनेशन. तो कैथरीन के पास 5 रुपए का कॉइन नहीं हो सकता है. तो ऑप्शन क्या ही, एक ही ऑप्शन बचता है, 1 रुपए का कॉइन.
I'll repeat the meaning of third point. ठीक है, थर्ड पॉइंट इज सेइंग कि आउट ऑफ द टोटल किड्स प्रेडिक्टेड बाय सनम, तो सनम ने 3 लोगों का नाम लिया है, इसमें 2 लोगों के पास कॉइन है, विच इज कैथरीन एंड सौरभ, बट नन ऑफ द of them are having the same denomination as predicted by Sanam. तो सनम is saying कि कैथरीन के पास 5 रुपए का कॉइन है, तो कैथरीन के पास 5 रुपए का कॉइन नहीं हो सकता है। ठीक है, सो 5 रुपए का कॉइन कैथरीन के पास नहीं हो सकता है। सौरभ के पास 2 रुपए का कॉइन है, ये हमने देख लिया। ठीक है, तो क्या ऑप्शन बचता है कैथरीन के पास? कैथरीन के पास एक ही ऑप्शन बचता है, विच इज 1 रुपी कॉइन। समझा? समझा अक्षर? समझा सबको? ठीक है, तो कैथरीन का निकल गया, सौरभ का निकल गया। एक और कोई है जिसके पास 5 रुपए का कॉइन है? ठीक है, एक और कोई है जिसके पास 5 रुपए का कॉइन है? ठीक है, सो सौरभ के पास कॉइन है, मतलब ममता और अभय के पास नहीं है। ममता और अभय के पास नहीं है, अभय के पास नहीं है, मतलब ममता के पास भी नहीं है। ठीक है, नाउ लेट्स रीड द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द प्रिडिक्शंस बाय कुरेशा, कुरेशा का जो प्रिडिक्शन है, व्हाट इज द टोटल सम ऑफ द मनी विद द किड्स? सो अमंग जॉन एंड हैरी, अमंग जॉन एंड हैरी, वन ऑफ देम शुड हैव 5 रुपी कॉइन। वन ऑफ देम शुड हैव 5, या तो इसके पास 5 होगा तो इसके पास कुछ नहीं होगा, या तो इसके पास कुछ नहीं होगा तो इसके पास 5 होगा। So sum will remain the same. Sum will remain the same. Sum should be 5. Sum should be 5. Correct? So answer to this question is 5. Last part I'll repeat. ठीक है. So question is saying कि as per the prediction by Kuresha, what is the total sum of money with the kids? तो तीनों किड्स को मिला करके कितना सम है, कितना अमाउंट है उनके पास? ठीक है, वी नो कि अभय के पास कुछ भी नहीं है, अभय के पास कुछ भी नहीं है। कैथरीन के पास एक है, सौरभ के पास 2 है, एक ही कॉइन बच गया है, विच इज 5 रुपए का कॉइन। 5 रुपए का कॉइन या तो जॉन के पास होगा या तो हैरी के पास होगा। क्यों? क्योंकि कुरेशा ने एक सही प्रिडिक्शन किया है। एज पर द प्रिडिक्शन बाय कुरेशा, वन ऑफ देम हैड अ कॉइन, राइट? वन ऑफ देम हैड अ कॉइन, सो इधर जॉन और हैरी, दे आर हैविंग द कॉइन ऑफ 5 रुपीज। सो इट विल नॉट मैटर कि जॉन के पास है या हैरी के पास है, बिकॉज सम इज गोइंग टू बी सेम। ठीक है, ठीक है, क्लियर? क्लियर? ऑलराइट, ऑलराइट। सो आई होप कोई डाउट नहीं, किसी को डाउट है तो पूछ लो यार, किसी को डाउट तो पूछ लो, नहीं है डाउट तो वी कैन मे बी स्टॉप द सेशन हियर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ऑलराइट, सो लेट्स स्टॉप द सेशन हियर। ठीक है, I'll share the PDF, I'll share the PPT with you all. ठीक है, you can go through it once more. ठीक है, चलो, ऑलराइट, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। आई होप सबको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा DILR सेक्शन के बारे में। विल अगेन solve some very interesting questions in the next class as well. ठीक है, so thank you so much. Bye bye everyone. Good night. Happy weekend. I'll share the deck.